Hello guys, this is Sapna from Sapna Master IELTS and this is 13th March 2021 IELTS exam review. You will get to know, आपको पता चलेगा कि कैसे questions आए थे, what was the reading, how was it and what type of questions were there in listening and also किस तरह के writing task 2 आया था. For that you can check this channel and you will get the answers also of reading and listening very soon as I get from my students. So first of all let's talk about listening की बात करते हैं. लिसनिंग में इट वॉज ईजी टू मॉडरेट. लिसनिंग जो थी वो इजी थी, मॉडरेट लेवल की थी और लेट्स गो इनटू द डिटेल्स पार्ट. इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड बट एमसीक्यूज फिलअप्स आए थे, वो कैब जो थोड़ी सी थी इजी थी एंड इट वाज क्विट फास्टर, थोड़ी सी फास्टर चल रही थी, इसलिए आपको ध्यान देना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, दिस स्पीड, बिकॉज इट विल बी इजी फॉर यू व्हेन यू टेक द एग्जाम, जब आप एग्जाम लोगे. कमिंग टू द रीडिंग पार्ट, रीडिंग में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे एंड द पैसेज 2 दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट, लेकिन जो ट्रू फॉल्स थे वो अंडरस्टैंडेबल थे, यू कुड अंडरस्टैंड इट, बट येस इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. पैसेज 2 वाज आल्सो डिफिकल्ट बट we were easy to find the locations. The students told me that who have taken the exam today from my batch and they told that the locations were found, but yes it was difficult to track the exact word for passage 2. Overall जो रीडिंग थी दैट वाज इजी टू मॉडरेट. नाउ कमिंग टू टास्क 1 विच वाज अ लाइन ग्राफ. जैसे कि स्टूडेंट ने बताया इट वाज समथिंग रिलेटेड टू द गुड्स एक्सपोर्टेड टू चाइना फ्रॉम 4 मेजर कंट्रीज, दैट इज 1991 से लेके 2012 तक का कोई चार्ट था, दैट वाज अ लाइन चार्ट. सो गाइज आप वैसे ही प्रिपेयर कीजिए. And task 2 that was related to history and culture. I told you that was a prediction given there. History से related questions आ सकते हैं and it is same like that. Let's talk about the topic. What was the topic of the morning slot? Nowadays there is no need for museums and art galleries anymore since everything is accessible through internet. People can find any historic fact there. So do you agree or disagree with this? So do you agree or disagree? It means you have to take a stand. I'll be posting the answers of reading and listening as well as the writing part very soon. Other words अगर इसको change करें तो there is another topic. That is, in past time, all the information was related in history and culture was stored by the museums, but nowadays this information is available on internet. Do you agree or disagree? So, जो students ने जैसे बताया है, I have given you that in the written form. You can check and you can practice according to that. So, all the best, guys. Whatever you want to learn, you can go and check. All the best, guys. Take care. Bye bye.